Hello guys, good morning. How is holiday? ईद कैसा चला गया रे बाबू? अच्छा हो गया ईद? कुछ लोग तो हॉलीडे पूछ लिया, ये नहीं आ गया आज भी. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. कैसा है रे बाबू सुधा अंकुल? बहुत मिस हो रहे जियो टेक्निकल क्लास में. मिस हो रहे. ईद पर मेरा ऑफिस का लैपटॉप खराब हो गया. अरे राधे राधे कृष्णा अंकुल, कैसे है? अरे किसी लोग हमको चॉकलेट भी नहीं दिया ईद का. बड़ी गिवन, बिरयानी तो छोड़ दो, बिरयानी तो छोड़ दो, सिर्फ चॉकलेट भी नहीं दिया. 1 टन मिल गया आटा, इनको 1 टन मिल गया ना. चलो, क्या एवरीथिंग गोइंग वेल? वेल बोलो फटाफट, कुछ पूछना. एनीथिंग यू वांट टू आस्क, समथिंग. Imran Garu, this is good question. Transmissivity is equal to T into B. So K into B. Combined aquifer na? It is na? H. अभी क्लियर हो गया? Is it clear now? So when we talk about confined aquifer, when we talk about, we'll take KB. B is the thickness of aquifer. Thickness of aquifer. When we talk about unconfined aquifer, KH. H is the depth of aquifer. So soil का अंदर पानी चलेगा ना ऐसा? Water will travel like this na soil. This ability of water in the soil. Ability of flow of water in the soil, permeability. Of flow of water in the soil, permeability. Coefficient that was represented by coefficient K. लिखो एक बार. Permeability. Write down everyone. Coefficient of permeability. बोलो. Coefficient of permeability. हाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किया ना. न्यूमेरिकल के बाद कंटिन्यू करो. The ability of flow of water in voids of the ability of flow of water in voids of subsoil strata, or the linear distance travel by flow of water in subsoil per unit time. Per unit time. Within 1 second or within 1 day. एक दिन में या 1 घंटा में या 1 मिनट में पानी how much distance it can travel. A distance we are measuring in terms of सिर्फ ओनली 1 लीनियर. किसी भी बोलते हैं सिर्फ एक डिस्टेंस बोलते हैं. क्लियर हो गया अभी? So either in a horizontal distance travel or vertically downward distance travel, either vertically downward or horizontally, how much distance is traveled, that is coefficient of permeability. Coefficient of permeability, K. So we can say in terms of meter per day, second or meter per minute, कुछ भी होता है. समझ आ गया coefficient of permeability? समझ आ गया coefficient of permeability क्या होता है? बोलो बराबर. अरे किलोमीटर तो मुश्किल है बाबू. साइल का किलोमीटर में कौन बात करेगा? साइल का अंदर चलने वाला. आपका बाइक नहीं KMPH बोलने के लिए. साइल का अंदर चलने वाला पानी आपका बाइक होगा KMPH बोलो. Now सिर्फ सिंगल डायरेक्शन, it is unit. We are considering or assuming water is unidirectional. अभी तक बहुत अच्छे चले. क्लियर नाउ? अभी क्लियर हो गया? यूनिडायरेक्शनल फ्लो, इधर ये हॉरिजॉन्टल में चलेगा, इट कैन ट्रैवल हॉरिजॉन्टली और इट कैन फॉल डाउन वर्टिकली डाउन. होगा तो होगा पानी ऐसा यूनिडायरेक्शनल में चलेगा हॉरिजॉन्टल, और होगा तो होगा वर्टिकली डाउनवर्ड. ऐसा होता है ना यूनिडायरेक्शनल. व्हाई? बिकॉज़ वी आर सेइंग विच यूनिट? वी आर सेइंग इन मीटर स्क्वायर. वी आर सेइंग इन मीटर स्क्वायर.
we are saying in meter, sorry, meter per day, meter per second, meter per minute. Actually क्या होता है बोलो? You want to write this? लकी जी लिखना है क्या? When you are talking about K, water is moving, Satish Garu, either vertically downward or water is moving horizontal. But actually within soil पानी कैसा चलेगा बोलो? ये soil होता है. Exactly water can travel horizontally. Exactly water can travel vertically. बोलो बेटा फटाफट. बोलो फटाफट पानी कैसा चल रहा है? Soil का अंदर. इधर आ गया पानी इधर आ गया. Water can travel inclined. हाँ यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है. कैसा होता है यूनिडायरेक्शनल? सो इधर से शुरू किया पानी, सुनो ध्यान से, इधर से शुरू किया पानी इधर पहुंच गया. सो डिस्प्लेसमेंट हैपेंड इन बोथ एक्स एंड वाई डायरेक्शन. देखो पानी ड्रॉपलेट इधर शुरू किया इधर पहुंच गया. डिस्प्लेसमेंट हैपेंड इन हाउ मेनी डायरेक्शन? दिस इज एक्स डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट and this is y direction displacement. So how much area of travel now will take in one day? How much area of travel carried out? That is transmissivity. समझ आ गया? एक दिन में how much area covered, how much distance in x axis, how much distance in y axis, इनको बोलते हैं transmissivity. T is equal to kb. So obviously t greater than k हो जाएगा ना, because it is a bidirectional area covered बात करेगा. We are talking in terms of area covered, bidirectional, ultimately t greater than k. So समझ आ गया बाबू? Lucky Garu, is it clear regarding transmissivity? Satish, so इधर और एक कुछ बात करना पड़ेगा. When we talk about coefficient of permeability K, we can write K is equal to CDM square into E cube upon 1 plus E into gamma W upon mu. ये तो हम geotechnical में बात करेगा फार्मूला. This formula will come in geotechnical engineering. CDM square into E cube upon 1 plus E into gamma W by mu. ज्यादा मत सोचो डिटेल में कैसा आ गया कहाँ आ गया, डिटेल में बाद में geotechnical में बात करेगा. So now this total we are writing whatever inside the bracket, that will be taken as a intrinsic permeability. ब्रैकेट का अंदर चलने वाला बोलते हैं इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी K नॉट. जियो में आज शुरू करेगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. टुडे विल स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. सो नाउ K is equal to K naught into gamma W by mu. K is equal to K naught into gamma W by mu. Coefficient of permeability is equal to K is coefficient of permeability, K naught into gamma W by mu. So वहां से आएगा हमको इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी K नॉट, इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी K नॉट, K mu upon gamma W. Intrinsic permeability K naught is equal to K mu upon gamma W. ये पूरा ना चाहिए हमको. All this not required actually. Actually they talk about what are units of intrinsic permeability. Intrinsic permeability expressed in the units Darcy. Intrinsic permeability expressed in the units meter square or Darcy. Where we can consider 1 Darcy is equal to this value, very important, by heart करना पड़ेगा. 9.87 into 10 raised to minus 13 meter square. Good Madhu. 1 Darcy is equal to 9.87 into 10 raised to minus 13 meter square. Intrinsic permeability K naught. चलो completed. Another name for unconfined aquifers. फटाफट comment box में बोलो. I'm not giving poll. Comment box में बोलो. Another name for an unconfined aquifers. अनकन्फाइंड एक्विफर के लिए, अरे सी वाला काउंट है बाबू. अरे 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 आपको शीप पता है? शीप ऐसा फॉलो किया क्या? शीप, एक शीप कौन सा जगह में चले गए, दूसरा शीप वहां भी घुस जाएगा. हाँ क्या हो गया गौरव गारू? आप तो लीडरशिप हो गया. बबलू, ज्ञानेंद्र, सुधा, नवनीत, फिल, सतीश, अभिषेक, आदर्श, श्रुति, गौरव, आशीष, लक्की, संयम, साक्षी, अभिषेक, निपुण. अरे दिस मेनी पीपल गिवन सी. हाँ दिस मेनी शीप्स इन द क्लास. अरे बाबा. सो अनकन्फाइंड बोलने के बाद वाटर टेबल होना चाहिए. यस कन्फाइंड होगा तो आर्टिजियन. डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉडाउन ऑफ ए वेल इज नोन एज discharge per unit drawdown is, this is a well which is having full water. We are extracting 1 meter of water from the well. 1 meter drawdown. Now what is discharge? Discharge per 1 meter depth. So we have taken this much depth. This is 1 meter. So what is the discharge here? The discharge for 1 meter depth, specific capacity. It's not a specific yield.
because you are taking store activity. Good Sanyam. Store activity is also called storage capacity, specific capacity. Store activity बात किया ना, चेक करो एक बार नोट्स में. Store activity बात किया नोट्स में, चेक करो एक बार. Store activity or specific capacity. Discharge per unit drawdown. Both are same. Store activity, storage capacity, specific capacity. All are same. So theory questions are not that much easy. Understand? सिंगल लाइन में क्वेश्चन है, इतना गलत हो जाएगा. और भी शीट बना लिया. Specific capacity is so per 1 meter drawdown. And what about area of the well? What about area of the well constructed? This is fixed already diameter. So area is constant. Depth is 1 meter drawdown. Ultimately for a given well it is constant. No? It is a constant for a given well. Discharge is constant. Specific capacity is constant because for one well they are talking. For a given well always the diameter is constant today, tomorrow, after 10 years, after 30 years. Well diameter constant. And you are not estimating for 2 meter, 3 meter, 10 meter. You are estimating for 1 meter drawdown. So it's a constant for a given well. Quantity of water retained by subsoil against gravity. Gravity against subsoil retain करने वाला पानी. Finally, retained and retention. कुछ हो गया? Retain से retention हो गया. Zone below water table is known as zone off. ये separation कौन होता है फिलजी? Separation कौन होता है रे बाबा? Saturation होता है. So saturation है zone below water table. Water in the zone of saturation is zone of saturation में होने वाला पानी under pressure, at atmospheric pressure, vacuum pressure, atmospheric temperature. So it is a gas pressure. It's not atmospheric pressure. It's a soil का अंदर होने वाला pressure. Inside soil happening pressure. Soil का अंदर होने वाला pressure, under pressure. Groundwater is in the zone of. Obviously saturation only. Isopistic lines. वो dikes they will come under irrigation. This we will discuss in irrigation. गौरव अब तो छोड़ो. Isopistic lines. Isopistic बोलते isopistic lines are contours representing piezometric surfaces. Shruti, not head. Surface. Contours representing piezometric head. क्या बोलते हैं इनको? piezometric head बोल. So these are piezometers. Sanyam garu. This is first surface, second surface, third surface, fourth surface. These are the contours connecting. Surface to surface contour connecting. Now, what should be head? Now in the piezometric head, this will be difference in piezometric head. This will be difference in piezometric head. This will be difference in piezometric head. Those are connected. Those points are connected. Potential head. Understand? समझ आ गया? So it connects the surfaces only. So we call this as equipotential lines. Equipotential lines we call if you connect delta H. Delta H1, delta H2, delta H3, if you connect na heads. Equipotential lines. This is called isopistic line. Please write down this. ये तो notes में नहीं है, एक बार लिखो. Write down this. Isopistic lines are the contour representing piezometric surfaces. Contours representing piezometric surfaces. Once again, you just put the surfaces of pressure heads. Na? You just take a hydraulic gradient line following. This is the hydraulic gradient line of piezometric head. Hydraulic gradient line HGL. That HGL line we can connect a isopistic line. But once one point to other point difference in heads are there. Na? One point to other point difference in heads. If you connect that, that is piezometric heads we call equipotential line. Equipotential line. The formation that does not contain any water is known as पानी नहीं होता है. Does not contain any water. पानी नहीं होने वाला कौन होता है? Obviously, rock, granite, hard strata. Property that
ग्राउंड प्रॉपर्टी ऑफ द ग्राउंड दैट अलाउस वाटर टू पास थ्रू। अरे अभी तो अभी लिख दिया, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल दैट अलाउस द वाटर फ्लो टू पास थ्रू। परमिएबिलिटी किसी का डाउट है? ये तो बाद में करेंगे। कोन ऑफ डिप्रेशन एंड इट्स एरिया इज लार्जेस्ट इन। कोन ऑफ डिप्रेशन का एरिया कहां जगह पे लार्जेस्ट होता है? कहां जगह पे ज्यादा पंपिंग मिलेगा, कहां जगह पे ज्यादा डिस्चार्ज मिलेगा हमको? वेयर यू कैन गेट मोर डिस्चार्ज, वेयर यू कैन गेट ज्यादा मोर प्रेशर एंड मोर पंपिंग। कन्फाइंड, कन्फाइंड में ज्यादा होता है ना, वी हैव रिटन ऑलरेडी। डिस्चार्ज थ्रू कन्फाइंड एक्विफर इज ग्रेटर देन डिस्चार्ज थ्रू अनकन्फाइंड। लिख दिया ना ये नोट पे। डिस्चार्ज थ्रू कन्फाइंड इज मोर देन डिस्चार्ज थ्रू अनकन्फाइंड। यस ऑब्वियसली प्रेशर इन कन्फाइंड इज हायर, प्रेशर इन कन्फाइंड इज हायर ना इनका वजह से ऑब्वियसली। When a sample has a porosity 28%, कुछ सैंपल में porosity 20% है। स्पेसिफिक यील्ड क्या होता है? आई विल गिव इन द पोल। ओके, पोल में दे दो बेटा, पोल में दे दो आंसर फटाफट। नाइस निपुण, हिमांशु, आशीष, गुड अभिषेक, ऋषिकेश, बबलू गारू, कीप गोइंग, प्रणव, सियोना, गौरव, लक्की, नवनीत, हर्ष गारू, मधु, गुड, आदर्श उपाध्याय, श्रीराग, वो आदर्श उपाध्याय नहीं सिर्फ आदर्श। अरे हाउ मेनी आदर्श आर हियर इन द क्लास रे बाबा? क्या उपाध्याय गारू प्रिंसिपल कहां चले गए? बट आपका तो गलत हो गया ना। n is equal to sy plus sr, sy is equal to n minus sr, 0.28 minus sr। sr तो जीरो नहीं, पक्का कुछ वैल्यू तो मिलेगा ना। sr is not zero, never zero, because सॉइल कम से कम कुछ पानी तो रिटेन करेगा। मिनिमम रिटेंशन बाय सॉइल sr। सॉइल तो कुछ रिटेन करेगा, हाँ हाइग्रोस्कोपिक वाला पानी कुछ तो कुछ रिटेन करेगा। सो ऑब्वियसली sr is decreasing less than 0.28। अंडरस्टैंड व्हाई इट इज इक्वल टू, नॉट रॉन्ग। देखो एक बार, इतना आसान है, देखो sy less than 0.28, sr is a minimum retention at least to be taken। so ये तो पक्का, sr also less than 0.28, again same formula ना, sr is equal to n minus sy। again sy तो पक्का कुछ होता है, कुछ तो yield हो जाएगा ना, कुछ तो कुछ, बिकॉज इनको एक्विफर बोलते, देखो एक बार, बिकॉज इट इज एक्विफर बोलते ना, एक्विफर को इफ sy 0 इनको क्या बोलते हैं हम, लकी गारू? sr भी नॉट 0, sy भी नॉट 0, नेवर। एक्विफर को दोनों रहेगा, स्पेसिफिक रिटेंशन नेवर बी 0 एंड स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिकली फॉर एक्विफर यील्ड तो होना चाहिए। इफ sy is 0 वी कॉल इट एज, इनको क्या बोलते हैं हम? एक्विफ्यूज बोलते हैं। समझ आ रहा है लकी? फ्लोइंग आर्टिजियन वेल्स आर एक्सपेक्टेड इन एरियाज वेयर। दे दो पोल में दे दो बेटा। गुड अभय, नाइस। के गौरव, संयम, रैंडम, निपुण, बबलू, हिमांशु, सियोना, नाइस, अभिषेक, प्रणव, आदर्श, साक्षी। एक्चुअली आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट क्वेश्चन। फिर हमको एक वर्ड पता है, आर्टिजियन इज रिलेटेड टू कन्फाइंड। हो गया क्वेश्चन। फ्लोइंग आर्टिजियन वेल्स आर एक्सपेक्टेड इन एरियाज वेयर द एक्विफर इज कन्फाइंड एंड इज इन हाइपरपिस्टिक कंडीशन। हाइपरपिस्टिक को तो बोल दिया ऑलरेडी, सेम पीजोमेट्रिक सरफेस होना चाहिए, एक्विफर इज कन्फाइंड एंड सेम पीजोमेट्रिक सरफेस होना चाहिए, बी। ये तो बताओ फटाफट इधर भी बोलो, इनको पोल भी नहीं जरूरत है। पोल इज आल्सो अननेसेसरी टाइम वेस्ट फाइट। चलो सॉल्व इट, गिव इन पोल। गुड आशीष। निपुण, ऋषिकेश, सियोना,
So people confusing about this, 4.6 ले लो, कुछ कंफ्यूजन नहीं चलने वाला होगा तो 4.6 ले लो बेटा. Good, Lucky, Anwar, Chirag, Bablu, Adarsh, Sakshi, Pranav, Phil Bro. For confined aquifer, storage coefficient 0.0005. Hydraulic head drops 14 meter over an area of 4.6 kilometers square. Delta groundwater volume change. So you take the storage coefficient as a specific yield. 0.005, 4.6 into 10 raised to 6 into 14. So you are going to get 32,200 meter cube. हो गया? किसी को डाउट है इनके बारे में? Are you getting or not? बोलो कुछ, क्या हो गया है बाबा? गलत कर लिया ना, ये बोलो पहले. Who did mistake? ये बोलो. 4.6 नहीं ले लिया, 406 ले लिया क्या? अरे बाबू. So ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना, सिंपल आसान क्वेश्चन है. SY एरिया डेल्टा GWT. That's it. Basic, stick on to the basic, आसान हो जाएगा ना. Only the pattern of asking question modified, sentence formation modified, remaining everything same. चलो, ये तो पोल में दे दो. Good, KK, Bablu, Nipun, Madhu, Navaneet, Lucky Garu, Rahul, Shruti, Imran, Pranav, Rushikesh, Srirag, very good. Gaurav, nice. Sudhankul, very good. Sanyam, nice. Kesar Garu, random, very good. Specific retention of an aquifer is 0.17. Effective porosity 0.28. Porosity 0.28. Retention 0.17. Yield 0.11. Volume of water drained by gravity from volume of 3000 meter cube aquifer. So we are generally writing like this now. Delta GW volume is equal to SY into SA into delta GWT. And this is nothing but first we have written. Musabir confused a lot on that day. He asked it. Why we have taken like that? This is volume of aquifer we have taken, total volume of aquifer. SY 0.11 into 333 meter cube. Getting or not? Surface area into delta GWT. चलो डन. इतना सारा क्वेश्चंस. A tracer takes 100 days to travel. A tracer takes 100 days to travel from well 1 to well 2, which are 100 meter apart. सुनो ध्यान से. Tracer takes 100 days to travel. T 100 days. Distance L is 100 meter. Elevation of water surface in well 2 is 3 meter below well 1. Delta H 3 meter. Porosity 0.15. What is K? Do you remember we have given the formula? T is equal to NL square upon K delta H. T is equal to NL square upon K delta H. अब तो K चाहिए. NL square by KT. Sorry, HT. NL square by HT. इसी को लगा रहे क्या? Anyone facing lag? No. Okay. 0.15 into 100 square. Delta H is 3 meter. Time is 100 days. 5 meter per day. हो गया ना? समझ आ गया एवरीवन? राहुल रेड्डी गारू. Okay. I'm trying to give the poll. आपका आंसर बना लिया. Dupe's assumptions are for unconfined aquifer. Water table of an aquifer drops by 100 centimeter. Drops by 100 centimeter.
100 kilometer square area. Porosity specific retention given. Porosity specific retention given. Delta GWV. Can you solve? Delta GWV, can you solve? Bolo fatafat. Go ahead. Tell me the answers. Tell me the answer. Somebody told 1000, somebody told 2 lakh. Option A 1000 coming. Option B 2 lakh coming. Option C 20,000 coming. Option D कौन आएगा? $200, 2000. अरे गौरव, आप ऑलरेडी आंसर दिया 1000. हाँ, आप ऑलरेडी आंसर बोल दिया ना 1000, आपको थप्पड़ मिलेगा. So this is porosity N, specific retention 5. Specific yield 0.2. Area 1000 kilometer square. Depth 100 centimeter. 0.2 into area 1000 kilometer square, depth 100 centimeter. Centimeter to kilometer. Centimeter to kilometer. 10 raised to minus 5. 10 raised to minus 5 ना? बोलो किसी को वॉइस ब्रेक आ रहा है फटाफट. नो, गुड. सेंटीमीटर टू किलोमीटर इज 10 raised to minus 5. Yes or no? Centimeter to kilometer. 1 centimeter 10 raised to minus 2 meter. 10 raised to minus 2 into 10 raised to minus 3 kilometer. So 10 raised to minus 5. हो गया. ये तो किलोमीटर स्क्वायर में है ऑलरेडी. Already that is there in kilometer square. So what are you waiting answer? 0.2 kilometer cube. Madhu Garu, you converted already to kilometer cube, but still answer is not correct. Nobody did well. Nobody did well. All 0 marks. Sorry, all negative marks. हर एक स्टूडेंट को 0 मार्क मिल गया. चलो 0.2 मिल गया ना, खुश रहो. अरे ये तो एरिया ना सुधांकुल. That is area ना सुधा गारू. चलो क्लियर. कंप्लीट ना, डन राइटिंग. सो गिव इट इन पोल. पोल में दे दो, हम पानी लेके आएगा, आप खत्म करो पोल. आई विल ब्रिंग वाटर एंड कम फिनिश द पोल. गुड निपुण. Good Ashish. Bablu Garu, nice. Pranav, cute, very good. Water is pumped from a well, tapping. Water is pumped from a well, tapping an unconfined aquifer at a certain discharge rate. For example, ये पहले वाला discharge rate ले लो Q1. And the steady drawdown X. Drawdown is X in observation well monitored. Q1 को steady drawdown बोल दिया, constant steady drawdown बोल दिया Q1 को X. Then subsequently, pumping discharge is doubled. Pumping discharge Q2 क्या होता है? Q2 is equal to 2Q1. Pumping discharge is doubled. And the steady drawdown in the same observation well, please observe here, where they are talking. When you increase the discharge, when you increase the pumping discharge, double the pumping discharge, then steady drawdown in the same observation well will be found to be more than double. More than double means it will be greater than 2x. Greater than 2x. So drawdown होता है 1, discharge is Q. Drawdown होता है 2, discharge is 2Q. ये तो दोनों proportionate में चलना पड़ेगा ना. Discharge and drawdown directly proportional.
proportional to each other or not? Or not? बोलो फटाफट पहले. Discharge and drawdown. X means yes. Drawdown is yes. Discharge and drawdown directly proportional to one another. But इधर तो क्या हो रहा है? Disproportionate हो रहा है. Why it is disproportionate? Because the flow is non-linear. Linear flow होने के बाद proportional होता है. Flow is non-linear ना. Flow is non-linear ना. समझ आ रहा है? Okay, okay, अंकेश गारू, take care. सुनो. This is the well. एक बार सुनो बेटा. This is the well. So we are taking drawdown from the well. Drawdown from the well we are taking. For example, from here you are taking a drawdown of x. You are reducing the height x. This is here. Initially here it is a fall down to x. Okay. When it is a fall down to x, it gives a discharge of q1. Okay. So in the same observation well bolte, they are saying in the same observation well, same well may, they are considering in the same observation well. So they have drawn down x plus some value extra additional means greater than 2x, greater than 2x. So if you take greater than 2x, what should be discharged to be taken? Greater than 2q. ऐसा भी होना चाहिए ना. If your drawdown is greater than 2x, discharge to be taken is greater than 2q. If your drawdown is 2x, discharge to be coming is 2q. So q and x should be proportional to each other. ऐसा no? ये बोलो पहले. q and x are proportional to each other. क्योंकि ये तो linear flow होना चाहिए. They should be linear flow. If they are not proportional to each other. समझ आ रहा है? Greater than 2x आ रहा है, but discharge is 2q only. Discharge is now 2q only. Greater than 2x is withdrawn. Greater than 2x is withdrawn. But discharge क्या है? 2q discharge. 2q discharge. So we call it as non-linear flow. हो जाएगा ना non-linear flow? Clear? Here why we talk about gravity? You are talking about an unconfined aquifer. Water is taken from well by push, pumping only na. They are talking about a pumping discharge na. See here, means we are withdrawing forcefully by pump. Pumping discharge का बारे में बात करने के टाइम पे क्या ग्रेविटी आएगा हमको? ग्रेविटी का जरूरत क्या है बेटा? Saturated thickness of aquifer, Madhu garu. Why thickness of aquifer will play a role in discharge here? Only we are focusing remaining factors set to be constant. We are thinking only about discharge drawdown relation. We'll talk only the discharge drawdown relation. Why we should talk about the thickness of aquifer? And if you talk thickness of aquifer reduced, drawdown also will reduce. It won't be increase. Thickness of aquifer reduced means drawdown also will reduce, na? Why it should increase? And Imran garu, linear का opposite कौन होता है? Q proportional to x linear होगा, Q not proportional to x non-linear भी हो जाएगा ना बेटा? If you say Q proportional to x linear, uniform, steady. Any words you can use. Q not proportional to x, then it should be non-linear, non-uniform, unsteady. वो भी हो जाएगा ना? Opposite words. But non-linear kind हुआ. समझ आ गया? Linear का opposite कौन होता है? Non-linear भी हो जाएगा ना बेटा? Steady groundwater flow occurring to an unconfined aquifer. सुनो. Study non-linear flow occurring in unconfined aquifer बोल रहे हैं. Unconfined aquifer of coarser sand underlined by impervious foundation, as shown in the figure. Depths of water table below the ground surface in the two observation wells fixed at a spacing of 290 meter. So a distance होता है ना, देखो इधर, a distance 290 meter. Along direction of flow 500.6 meter. Direction of flow में depths of water table water surface elevation. So इधर से इधर क्या होता है? 15 meter. इधर से इधर 14.4 मीटर.
Yes or no? Draw down. Draw down 5 meter and 5.6, H 15 and 14.4. Draw down 5 and 5.6, H 15 and 14.4. हो जाएगा. Sand layer is 20 meter thick. Coefficient of permeability is this one. Discharge. Discharge pi k H1 square minus H2 square ln R2 by R1. H2 square by H1 square कोई दिक्कत नहीं. इस आएगा. There is no R2, no R1. सिर्फ एक डिस्टेंस मिल रहा है हमको. Only one distance you are getting here. So no R2, no R1. यहां से करो हो जाएगा ना. You can do I is equal to delta H by L. What is delta H? I is equal to delta H by L, delta H 0.6, 15 minus 14.4 by 290. What is I? .00206. Q is equal to K, 4 into 10 raised to minus 3 centimeter per second. 4 into 10 raised to minus 5 meter per second into 86400. This is for conversion of K value to meter per day. ये समझ आ गया? 4 into 10 raised to minus 5 into 86,400. I 0.00206. 20 meter, 1 meter width. देखो एक बार. Meter cube per day per meter width. Meter cube per day per meter width. So it will be taken 1 meter. Discharge तो मिलेगा अभी. So हम ऐसा अनकन्फाइंड एक्विफर देखने के बाद क्या सोच रहे? अनकन्फाइंड एक्विफर देखने के बाद हम सोचेगा गलत हो गया. डेटा इनसफिशिएंट हो गया. बट सिंपल Q इज इक्वल टू KI से हो गया ना बेटा. क्या है 0.1423. क्लियर समझ आ गया. So don't consider if R2 R1 not given insufficient data. R2 R1 not given, don't consider as insufficient data. Just go with other formula, try with other formula, simple basic formula हो जाएगा. समझ आ रहा है? क्वेश्चन तो इतना आसान हो गया देखो हमको. बोलो सुधांकुल. हाँ ऐसा आइडिया तो नहीं मिलेगा पक्का, बट ये आइडिया एग्जाम का टाइम में ना आएगा. वी हैव टू थिंक इनोवेटिवली. एग्जाम का टाइम में ऐसा सोचना पड़ेगा. रिमेंबर वन थिंग, गेट एंड ईएससी में कभी भी एमटीए नहीं मिलेगा. ऐसा सोच के आंसर देना पड़ेगा. ओके, मार्क्स टू ऑल नहीं आएगा. इनसफिशिएंट डेटा नहीं आएगा गेट एंड ईएससी में. दे कैन चेक बिफोर गिविंग क्वेश्चन इटसेल्फ एन नंबर ऑफ टाइम्स. सो क्वेश्चन करेक्ट होता है, हम खुद से करना पड़ेगा. ऐसा सोच के आंसर करो. ठीक है. confined aquifer of 25 meter thick, 2 kilometer wide. 25 meter thick, 2 kilometer wide. Two observation wells located 2 kilometer apart in the direction of flow. Indicated heads 45 and 39.5. Coefficient of permeability 30 meter per day. Coefficient of permeability 30 meter per day. Okay. Then the piezometric head at an observation well located 300 meter upstream well. So पहले तो Q is equal to KIA हो जाएगा या नहीं? किया से K value 30. Gradient 45 minus 39.5 by 2000. Area 25 into 1. .0625 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर विड्थ. कभी भी हम मीटर विड्थ को निकलना पड़ेगा ना बेटा. HB समझ आ रहा है? अरे ये कौन है थैंक यू बोलने वाला? इधर सिर्फ थैंक यू बोलने के आ गया क्या? ये बात बताओ एक बार. सिर्फ थैंक यू बोलने के आ गया क्या? बोलो. हाँ क्या चल रहा है बाबू चपंडी? सिर्फ थैंक यू बोलने के आ गया तो बोलो फटाफट. हो गया this one. Then piezometric head
at an observation well located 300 meter from the upstream well. Piezometric head, एक बात सुनो, this is well 1, this is well 2, okay? well 1 well 2 का डिस्टेंस क्या होता है? 2 किलोमीटर, 2000 मीटर, 2000 मीटर, यस ऑब्वियसली गौरव। सो यहां से यहां हेड क्या हो गया? यहां से यहां हेड क्या हो गया? डेल्टा एच 5.5. So this is upstream, this is downstream. I is equal to delta H by L 5.5 upon 2000. Okay, ये समझ आ गया? Upstream या downstream, upstream and downstream. Delta H by L I is equal to, don't say the value, value तो जरूरत नहीं है अभी गौरव भैया. Now from upstream 300 मीटर, upstream से 300 मीटर ले लो, यहाँ एक वेल और दूसरा वेल लगा दिया. We have made another well upstream से 300 मीटर में, 300 मीटर में एक दूसरा वेल लगा दिया. Now what should be piezometric head here? So this is actual head traveling, this is the delta H here. One minute. So इधर से इधर देखो एक बार, this is the first free water surface, this is the second free water surface. ये दोनों का डिफरेंस डेल्टा एच. नाउ फर्स्ट फ्री वाटर सरफेस एंड सेकंड फ्री वाटर सरफेस का बीच में और दूसरा डेल्टा एच आएगा. एट व्हाट डिस्टेंस? 3000 मीटर, 3000 मीटर. सो नाउ व्हाट इज डेल्टा एच हियर? आई इज कांस्टेंट, आई कांस्टेंट हो गया, डेल्टा एच बोलो ना फटाफट, आई कांस्टेंट हो गया, डेल्टा एच बोलो ना, 0.825 मीटर. सो ये क्या है? ये क्या है बेटा? ये तो डिफरेंस इन हेड, piezometric head, this one is piezometric head, this one required for us, this one required for us. समझ आ गया? हमको ये होना चाहिए. So what is total head? Total head 20, 44.45 total head. हाँ, total head 45, nice, 45 minus 0.825, 44.175. So this is 45, this is 39.5. ये चाहिए हमको piezometric head 44.175. समझ आ रहा है? So two questions combined here. एक तो हाइड्रोलॉजी से आ गया, दूसरा तो सॉइल मैकेनिक्स से. कंबाइंड वाला हो गया. देखो, so this is from हाइड्रोलॉजी, 4 marks. एक्चुअली ये कंफाइंड एक्वीफर 25 मीटर थिकनेस एंड 2 किलोमीटर वाइड ना. अब भाई हम पूरा विड्थ को डिस्चार्ज कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेगा, कभी भी पूरा विड्थ को डिस्चार्ज एक्सप्रेस नहीं करेगा. सिर्फ 1 मीटर विड्थ को निकालना पड़ेगा सॉइल में, क्योंकि पूरा 2000 मीटर डज नॉट कंट्रीब्यूट डिस्चार्ज. एक साथ कंट्रीब्यूट करेगा पूरा का पूरा 2000 मीटर, 2 किलोमीटर एक साथ में कंट्रीब्यूट करेगा. बोलो बेटा, पानी दिएगा एक साथ में पूरा का पूरा 2000 मीटर. सो सिर्फ 1 मीटर यूनिट विड्थ लेके सॉल्व करना पड़ेगा. इनका वजह से एक साथ में पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. इनका वजह से हम क्या करेंगे, 1 मीटर लेके सॉल्व करके चलेगा. समझ आ रहे बाबू? क्लियर ना? और किसी को डाउट है क्वेश्चन में? देखो, इतना मॉडल्स, इतना परेशान करने वाला मॉडल्स होता है हमारे पास क्या होता है? इतना परेशान करने वाला मॉडल्स. ये तो सीखना पड़ेगा संयम गारू. सिर्फ रेगुलर टेक्स्ट बुक मॉडल सॉल्व करके, कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व करके गेट एग्जाम को चलने के बाद कुछ नहीं मिलेगा. टेक्स्ट बुक मॉडल सॉल्व करके गेट एग्जाम को चलने के बाद हमको कुछ नहीं मिलेगा. नया मॉडल तो सॉल्व करके चलना पड़ेगा. Okay, this is confined aquifer. We'll talk about confined later. We can solve this one. Discharge from a fully penetrating well. This is also confined. 1 minute. This is also confined. Confined are everything is confined only. अरे this many questions all are from confined. ये तो हो गया अभी. Just now we have done. Oh, this is also confined. अरे वाह, इतने सारे confined में आ रहे. 1 minute guys. Okay, we'll discuss about confined now. Confined के बारे में बात करेंगे अभी. चलो, we'll go on discuss now. थीम गारू, इनको बोलते हैं. थीम गारू आएगा. Confined aquifer. Confined aquifer. So confined aquifer वो क्या होता है? The aquifer. अरे बाबू, एक बार आपका नोट्स में हाउ मेनी क्वेश्चंस हो गया पूरा हाइड्रोलॉजी में चेक करो. हम पूरा हाइड्रोलॉजी में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन हाइड्रोलॉजी वी फिनिश्ड इन 50 to 60 आवर्स. ओके, 50 to 60 आवर्स, मैक्सिमम 60 आवर्स में खत्म कर लिया. दैट मेनी क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व. कोई टीचर 160 आवर्स लेने वाला सब्जेक्ट में नहीं करेगा. सुनो लकी जी,
160 आवर्स 150 आवर्स करने वाला सब्जेक्ट में भी दिस मेनी क्वेश्चंस नहीं मिलेगा आपको, इतना सारा क्वेश्चन। और डीपीपी का पूछना जरूरत क्या है, और डीपीपी का पूछना जरूरत क्या है बोलो? हाँ, क्लास क्वेश्चन अच्छे से करो प्लीज, प्लीज डू मोर एंड मोर टाइम्स क्लास क्वेश्चन। ये क्लास क्वेश्चन तो डायमंड है, अब डीपीपी का चक्कर में चलने के बाद पूरा का पूरा खराब हो जाएगा हालत। आई विल गिव यू लिंक्स, लास्ट 2-3 इयर्स में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिया ना, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज का लिंक्स दिएगा, ठीक है? ये लिंक से आपको बहुत अच्छे होता है, यू डू मोर क्वेश्चंस, ओके? हमारा नोट्स में इतना अच्छे डायमंड्स है, आप गोल्ड का चक्कर में, डीपीपी का चक्कर में कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना जरूरी नहीं। हमारा नोट्स में हर एक मॉडल है, हमारा नोट्स में हर एक मॉडल है। द एक्विफर which is sandwiched between the aquifer which is sandwiched between two impervious strata, aquifer which is sandwiched between two impervious strata। देखो ऊपर क्ले लेयर होता है, इधर क्ले लेयर होता है, इधर पानी चल रहा है और नीचे रॉक स्ट्रेटा मिलेगा। सो दिस इज कन्फाइंड एक्विफर ना। सो ये बीच में चलने वाला क्या होता है, ये एक्विफर आर्टिजियन कन्फाइंड, आर्टिजियन or confined, artesian or confined। so the aquifer which is sandwiched between two impervious layers, इनको बोलते हैं हम artesian या confined aquifer। या lower one is aquifuse, ऊपर one is aquiclude, lower one is aquifuse, ऊपर वाला aquiclude। बच्चे लोग ऐसा होता है, कृष्णा गारू के पास 2 बफेलो है, एक बफेलो तो हर एक दिन 5 लीटर दूध दे रहा है, दूसरा बफेलो सिर्फ 1 लीटर दे रहा है। सो ये 5 लीटर देने वाला और ज्यादा टप्पर देके कृष्णा गारू को 5 लीटर से इंक्रीज करने के लिए कोशिश करेगा, 6 लीटर 7 लीटर के लिए। बच्चे लोग भी ऐसा चलेगा आजकल, ये तो ज्यादा दे रहा है, 5 लीटर दे रहे दूध, बट स्टिल ही इज फोकसिंग ऑन दैट बफेलो व्हिच इज गिविंग मोर, बट नॉट द वन हु इज गिविंग 1 लीटर। हां, रिगार्डिंग दैट ओनली गौरव गारू, रिगार्डिंग दैट ओनली। कुछ लोग तो कुछ भी नहीं दे रहे, क्वेश्चंस क्लास में भी नहीं कर रहे, कहां पे भी नहीं कर रहे। तो आप तो पूछ रहे क्लास में क्वेश्चंस करने वाला से और ज्यादा पूछ रहे, क्लास में इतना सारा क्वेश्चंस करने के बाद भी और ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे। चलो चलो, सो दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय थीम्स इक्वेशन। थीम्स इक्वेशन, थीम्स पता है, थीम गारू इन प्लेस ऑफ ड्यूपीट। सो पहले अनकन्फाइंड को किसी को हो गया अनकन्फाइंड, अनकन्फाइंड इज रिगार्डिंग ड्यूपीट इक्वेशन ना, वी स्टडीड सो मेनी assumptions, we studied so many assumptions, same here, themes equation, themes equation। so we are talking about themes equation, study laminar radial flow, study laminar radial flow into a well in confined aquifer, study laminar radial flow into a well in confined aquifer। Darcy's equation is valid, Darcy's equation is valid, K and T remains constant at any thickness, K and T remains constant at any thickness। they can say always na, they can say always assumptions because nobody can question, बाद में आके कुछ पूछना जरूरी नहीं, you don't want to ask any kind of questions related to it, इनका वजह से they are providing all the assumptions। चलो this is our ground level, this is our ground level। ये तो जोन ऑफ एरिएशन, दिस इज रेगुलर जोन ऑफ एरिएशन, 2 PM है, आई होप सो इट इज एट 8 बजे होता है, मैं सोच रहा फील गारू 8 PM ओनली, 8 PM एयर पोल्यूशन का, 8 बजे को एयर पोल्यूशन का टेस्ट है, 8 बजे को। सो नाउ आफ्टर दिस सम क्ले स्ट्रेटा केम, ये तो इम्परवियस क्ले स्ट्रेटा, दिस इज आवर एक्विफर, दिस इज आवर एक्विफर। और इनका नीचे तो रॉक स्ट्रेटा, समझ आ गया, लेयर समझ आ गया पहले। यस हिमांशु, बहुत क्वेश्चन होता है, इफ यू अटेंड फ्रॉम दिस जून मंथ टिल फरवरी फर्स्ट वीक, आपको केपी सर का सिर्फ स्पेशल वाईटी प्लस क्लासेस से आपका नोट्स में 6000 to 10000 क्वेश्चन मिलेगा, बट यू नीड टू अटेंड हर एक सेशन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, एवरी वीक 3-4 क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन हो जाएगा स्पेशल क्लास में, कोई दिक्कत नहीं। लकी गारू आपको भी डीपीपी का चक्कर में मत चलो, हर एक वीक में ऑलरेडी कंप्लीटेड सब्जेक्ट के बारे में 3 to 4 टेस्ट मिलेगा, हर एक टेस्ट अटेंड करो, मिनिमम डेली 10 क्वेश्चन मिलेगा आपको। सो वीक में 30 to 40 क्वेश्चन मिलेगा पक्का, 30 to 40 क्वेश्चन वीक में, तो बहुत ज्यादा होता है ना। और लास्ट दिसंबर जनवरी में, और ये बात सुनो, दिसंबर जनवरी में एवरीडे टेस्ट होता है, दिसंबर 1 से शुरू करके जनवरी 31 तक हर एक दिन ऑल सब्जेक्ट कंबाइंड टेस्ट रहेगा, ऑल सब्जेक्ट कंबाइंड टेस्ट रहेगा। सो मेनी क्वेश्चंस यू कैन गेट, कोई दिक्कत नहीं आपको। चलो चलो, अरे सुधा गारू, बिना सुधा इन द क्लास टेस्ट नहीं हो जाएगा बेटा, विदाउट सुधा अंकुल टेस्ट नहीं हो जाएगा, दैट इज व्हाई ना निपुण, ये तो करना पड़ेगा। ऑल आवर स्टूडेंट्स आर क्रैकिंग आईआईटीज बिकॉज़ ऑफ दैट रीजन ओनली। हमारा ऑलरेडी लास्ट ईयर स्टूडेंट्स ना, दे आर गेटिंग इजीली आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, इनका वजह से। चलो
ये समझ आ गया पिक्चर एक्विफर का? कहाँ है वाटर टेबल? वाटर टेबल इधर है बेटा, दिस इज वाटर टेबल। क्ले का नीचे वाटर टेबल है, वाटर टेबल क्ले का नीचे, सो वी आर टेकिंग दिस एज अ बी, थिकनेस ऑफ एक्विफर, thickness of aquifer. Now this is our design well. हम एक डिजाइन वेल को इधर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। दिस इज आवर डिजाइन वेल, प्रपोज्ड वेल या डिजाइन वेल? प्रपोज्ड वेल, प्रपोज्ड वेल। टोटल हाइट क्या होता है? देखो इधर थिकनेस डिफरेंट है, टोटल हाइट डिफरेंट है, समझ आ रहा है? प्रीवियसली क्या हो गया, बोथ थिकनेस एंड हाइट, टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल बोथ सेम। अभी तो h डिफरेंट है, b डिफरेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनकन्फाइंड एक्विफर में h एंड थिकनेस बोथ सेम हो गया है नहीं? समझ आ रहा है पिक्चर? अनकन्फाइंड एक्विफर में दोनों सेम है। अभी तो थिकनेस ऑफ एक्विफर डिफरेंट है, h डिफरेंट है। दिस इज रेडियस ऑफ वेल rw, रेडियस ऑफ वेल rw, सेम लाइक प्रीवियस ऑब्जर्वेशन वेल 1, ऑब्जर्वेशन वेल 2, ऑब्जर्वेशन वेल 1, ऑब्जर्वेशन वेल 2। देखो एक बार, ऑब्जर्वेशन वेल 1 एंड ऑब्जर्वेशन वेल 2, समझ आ गया? वेल 1 वेल 2 ऑब्जर्वेशंस, OW1 ऑब्जर्वेशन वेल 1, OW2 ऑब्जर्वेशन वेल 2। सो इनको रेडियल डिस्टेंस होता है इधर से इधर R1, इनको रेडियल डिस्टेंस होता है इधर टू इधर R2। समझ आ रहा है? R1 R2 समझ आ रहा है बाबू? सो अब बात कर रहे हैं हम कोन ऑफ डिप्रेशन के बारे में। कोन ऑफ डिप्रेशन, 1 मिनट, जस्ट ए स्मॉल चेंज, सॉरी, जस्ट फॉर ए स्मॉल चेंज। ये जोन ऑफ एरेशन में हमको कुछ पानी नहीं मिलेगा ना, हम सिर्फ जोन ऑफ सैचुरेशन का हाइट लेना पड़ेगा। ये हाइट ले लो, ओनली दैट चेंज, जोन ऑफ सैचुरेशन का हाइट ले लो। क्योंकि हम कोन ऑफ डिप्रेशन कहां से ड्रा करेंगे? कोन ऑफ डिप्रेशन भी जोन ऑफ सैचुरेशन से कंसीडर करेंगे कोन ऑफ डिप्रेशन। सो अब तो आएगा कोन ऑफ डिप्रेशन। देखो हाउ द कोन ऑफ डिप्रेशन विल बी। कोन ऑफ डिप्रेशन इज कमिंग like this, cone of depression is coming like this, so this is S, this is H, S1 S2, H1 H2 होता है ना, इधर से इधर H1। समझ आ रहा है? सेम पैटर्न, इधर से इधर H2, S डॉट आउट H रिमाइनिंग दैट S1 H1 S2 H2। क्लियर हो गया अभी? Q is equal to KIA, Q is equal to KIA, I is equal to BH by dr, A is 2 pi RB, I is equal to DH by dr, area 2 pi R into B, 2 pi R into B. So now what we are writing, dr by R, dr by R integration बोलते R1 to R2 is equal to H1 to H2 pi kb by Q into dH, 2 pi kb, 2 pi kb by Q into dH। हो रहा है या नहीं? dr by R तो पता है, सेम डेरिवेशन वी हैव डन प्रीवियसली। dr by R तो पता हो है ना आपको, सेम डेरिवेशन व्हाट वी हैव डन प्रीवियसली। सो अब तो क्या मिल रहा है? अब तो वी आर गेटिंग ln R2 by R1 is equal to ln R2 by R1 is equal to 2 pi kb, 2 pi kb by Q H2 minus H1, 2 pi kb by 2 into H2 minus H1। ये आ रहा है या नहीं? इंटीग्रेशन के बाद, आफ्टर इंटीग्रेशन हमको क्या चाहिए? R2 by R1 चाहिए, डिस्चार्ज चाहिए हमको? बोलो फटाफट, हमको क्या चाहिए? R2 by R1 और डिस्चार्ज मिलेगा अभी डिस्चार्ज का। सो डिस्चार्ज तो मिलेगा, देखो एक बार, Q is equal to 2 pi kb into H2 minus H1 by ln R2 upon R1। सो बेसिक फार्मूला तो आ गया ना, विल राइट। 2 ऑब्जर्वेशन वेल होगा क्या होता है, 1 ऑब्जर्वेशन वेल होगा क्या होता है, नो ऑब्जर्वेशन वेल क्या होता है, ये तो बात करेंगे। पहले तो बेसिक फार्मूला मिल गया, पहले तो बेसिक फार्मूला मिल गया 2 pi kb H2 minus H1 by ln R2 by R1। डन हो गया? एवरीवन फिनिश्ड? फिनिश्ड एवरीवन? शैल वी मूव? नाउ फर्स्ट केस,
सुधागरु का घर का आसपास में 2 ऑब्जर्वेशन वेल्स है, 2 ऑब्जर्वेशन वेल्स, 2 ऑब्जर्वेशन वेल्स, वी कैन राइट Q is equal to 2 pi t. What is KB? KB क्या होता है? KB is T, ट्रांसमिसिविटी होता है ना बेटा, 2 pi t ट्रांसमिसिविटी, 2 pi t H2 minus H1 by Ln R2 by R1, H2 minus H1 by Ln R2 by R1. So ये बात सुनो, what is H2? कैपिटल H minus S2, H1 is capital H minus S1. Yes or no? हमको क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं? What they are giving in our question? Question में S1 S2 they are giving drawdowns only they are giving. So we can change the formula also like this, 2 pi t S1 minus S2 by Ln R2 by R1. ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. S1 minus S2 by Ln R2 by R1, because H2 H1 का जगह में सब्स्टिट्यूट करने के बाद इधर, अरे दिमाग नहीं है आपको सुधा अंकुल, H minus S2 माइनस H माइनस S1 क्या आता है? H माइनस S2 माइनस H प्लस S1, ये तो कैंसिल हो गया, S1 माइनस S2 हो गया ना रे बाबा. चलो, ओनली वन ऑब्जर्वेशन वेल बोलते हैं, ओनली वन ऑब्जर्वेशन वेल, वी हैव ओनली वन ऑब्जर्वेशन वेल. Q इज इक्वल टू 2 pi t, 2 pi t. सो अब तो क्या लिखना है? अब तो क्या लिखना है? ओनली सिर्फ एक वेल हो रहा है, कैपिटल H माइनस H1 Ln R by R1 हो जाएगा ना, कैपिटल H माइनस H1 अपॉन Ln R by R1, कैपिटल H माइनस H1 अपॉन Ln R by R1. R is radius of influence, R is radius of influence. हाँ ऐसा भी ले सकता है निपुण काल, कोई दिक्कत नहीं. गुड. सो इनको तो 2 pi t S1 Ln R by R1, 2 pi t S1 Ln R by R1. एस तो दिया तो ले लेंगे, नहीं दिया तो क्या ले लेंगे संयम, इधर फर्स्ट फार्मूला सेकंड फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला सेकंड फार्मूला, कुछ भी ले सकता है ना. समटाइम्स वी कैन टेक लाइक दैट आल्सो ना. चलो, नो ऑब्जर्वेशन वेल केस. अरे T इज अ ट्रांसमिसिविटी रे बाबा, ट्रांसमिसिविटी KB बोल दिया ना, T इज इक्वल टू KB, ट्रांसमिसिविटी T इज इक्वल टू KB. अरे नींद से बाहर आ जाओ बेटा, नींद से बाहर आ जाओ, नींद से बाहर आ जाओ. चलो, सो क्या हो रहा है? नो ऑब्जर्वेशन वेल केस, ये तो आसान है. 2 pi TS Ln R by RW, सिंपल. 2 pi TS R by RW Ln R by RW. So this is most important. सारा क्वेश्चंस वहां से आए हमको. Most of the numerical questions coming from this formula. Most of the numerical questions coming from this formula. If one observation well and proposed well, ऐसा होगा तो then again confusion में चलना पड़ेगा. 2 pi t H1 minus HW Ln R1 by RW. ये तो हम अनकन्फाइंड में भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया ना. 2 pi t H1 minus HW upon Ln R1 by RW. Same one is information is regarding observation well, another information is regarding pumping well, proposed well. So 2 pi t H1 minus HW upon Ln R1 by RW. बोलो सुधांकुल क्या हो रहा है? अरे सिर्फ एक फार्मूला समझ होने के बाद पूरा समझ आएगा बेटा. 2 pi t लेना पड़ेगा, डिफरेंस इन हाइट्स डिवाइडेड बाय Ln मैक्सिमम डिस्टेंस बाय मिनिमम डिस्टेंस, बस. 2 pi t इनटू डिफरेंस इन हाइट्स डिवाइडेड बाय Ln मैक्सिमम डिस्टेंस अपॉन मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम आर वैल्यू बाय मिनिमम आर वैल्यू. ये तो आसान क्वेश्चन. डिफरेंस बिटवीन कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड इज, अनकन्फाइंड में कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ले रहे हैं, कन्फाइंड में ट्रांसमिसिविटी ले रहे हैं. क्लियर हो गया अभी? चलो क्लियर हो गया. यस, R1 R2 नॉट गिवन. सुनो, R1 R2 नॉट गिवन ना, एक बार काउंट फिल करो. ये देना पड़ेगा, दे कैन गिव R and RW. ये भी नहीं है. R1 R2 नॉट गिवन, रेडियस ऑफ L एंड रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस नॉट गिवन, Q इज इक्वल टू क्या है बस. सो ये तो चाहिए ना डेटा, R1 R2 चाहिए ना, होगा कैपिटल R RW चाहिए. कंप्लीटली दे आर एब्सेंट. Q इज
सोचता हूँ नोट्स में सार ने नहीं लिखवाया होगा, चेक करने के बाद नोट्स में अरे पूरा मिलेगा सुधांकुल, चेक करने के बाद पूरा मिलेगा। ये तो बच्चे लोग ऐसा भी मैसेज करे, और एक स्टूडेंट है आदित्य नाम पे, ये आदित्य गारू एक क्वेश्चन खींच के पीवाई की बुक से हमको लगा देंगे, मैसेज करेंगे इमीडिएटली आई सेड दिस इज द चैप्टर नेम, एक बार ये चैप्टर में चेक करो, इनको फुल डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि पीवाई की बुक में दूसरा चैप्टर में दिए गए क्वेश्चन इधर उधर चल जाएगा पीवाई की बुक में। सो हमको पूरा का पूरा हमारा नोट्स में होता है, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट रिगार्डिंग। और ये थोड़ा मॉडिफाई करके देने के बाद भी कुछ सेम मॉडल रहेगा, वैल्यू चेंज करना पड़ेगा बस, और कुछ ज्यादा नहीं। चलो विल कंटिन्यू टुमारो, टुमारो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, विल डू द न्यूमेरिकल्स टुमारो, ओके विल डू द न्यूमेरिकल्स। होमवर्क कुछ मत ले लो, पढ़ लो, डोंट डू एनी होमवर्क, जस्ट रीड, नो अबाउट द फार्मूला, फार्मूला के बारे में अच्छे से समझ लो, आज का क्वेश्चन करो, कल डायरेक्टली क्लास में करेंगे, कन्फाइंड एक्टिफर सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर, ऑल कन्फाइंड एक्टिफर क्वेश्चंस कल सॉल्व करेंगे, ठीक है डन। टुडे एयर पोल्यूशन टेस्ट 8 PM। अरे आज तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल शुरू करेंगे, स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल टुडे।